Good evening to learners. Good Sir, evening. very good evening. So last unit, today we'll complete the marketing of rural products and services. So how tremendous and cordial marketing system should be maintained in rural areas, though there are numbers of problems are faced by the rural entrepreneur. So far we came to know from different units, from different subjects. Hence, this is the topic as marketing rural products and services. The rural markets are bottom of pyramids markets present before us a prodigious opportunity for satisfying the twin objectives of accelerating economic growth and poverty eradications. So main target focus of the rural enterprise is to unemployment, eradication of the unemployment and poverty and economic growth, how achieve. So how we eradicate the poverty and unemployment and simultaneously we maintain the economic growth and development in the rural areas. In recent years, the demand for rural products in the urban areas has also witnessed a robust growth rate. There is heavy demand in urban areas of the rural product. Still, handicrafts, organic foods, and village tourism are access cases in point. So these enterprises faces several problems like inefficiency in procurement and storage, particularly the storage facility is not available in the rural areas. The surplus product has been produced by the rural entrepreneur from the agricultural sectors that it is inevitable and necessity the storage facility. So surplus vegetables of food grains production house in rural area by the farmers, it must be stored properly by warehouse department and collection storage, poor processing technology leading to lack of market development capacities and absence of well trained personnel. So that absence of well trained personnel in the region and the assistance from the government sides is very essential. How to collect the food grains and vegetables by which we can store properly to the warehouse systems, and the farmers will be able to get the proper price that will be the farmers will be benefited. Understanding rural and urban markets and a large number of these young people will be in the rural areas. We know that maximum persons belongs to young mass in living in rural areas. A wave of consumerism is also sweeping the country and several new trends can be observed so far today. The number of double income families continues to increase nowadays. प्रत्येक सारा भारत रे सिंगल इनकम रे it is too difficult to task the middle class family peoples and those are living below the poverty line. The single income is too difficult to live in this society to sustain their lifestyle of the family lifestyle. Hence, double income is very essential. The working women have fueled demand for a large number of products like saris, ready to cook food, household helps, and laundry services. All these could be new enterprise ideas. This is also ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ରହିକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଢ଼ୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘର ଉପକରଣ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି. So ଯଦି male member as engaged elsewhere, the housewife also engaged in double income as they are selling as like saris and other household items, utensils. बहुत बड़ा देखा जाउची महिला माने घरे रहिकरी विभिन्न प्रकार बिक्री टिक्री मध्य करूचंती. So double income is very essential nowadays in the society to sustain comfortable life, and income levels in the corporate sector are sky rocketing, thus fueling an increased demand for goods and services. So urban area में देखुचंती there is heavy demand on different goods and services
The rural goods or rural product and urban product and foreign products are heavily demanded because the urban people income is just like rocket launching income, and there is a heavy demand on the product. प्रचुर परिमाण रे वर्तमान देखा जाउची जे विभिन्न प्रकार नेसेसिटी प्रोडक्ट छाड़ी तापरे कंफर्टेबल लग्जरियस लाइफ अर्बन एरिया रे लोक माने सब मेंटेन करूचंती. So like two wheeler and the modern sophisticated four wheeler vehicle also using and maintaining their lifestyle nowadays. So the growth of organized retail is both an opportunity and a challenge for the rural entrepreneur. A quality product will get access to a national market through an organized retail network. On the other hand, organized retail effort could launch an attack on rural markets by opening rural outlets. So जो मॉडर्न प्रोडक्ट गुड़िक जोगुड़ाक सब आसूची वर्तमान ता प्रति लोक मानकर बेसी आग्रह सृष्टि होची. So rural product गुड़िक sometimes neglected. So we should acquainted with the rural products with the urban people and try to export the goods commodities that is produced in rural areas, by which heavy demand on the product will be held possible, so that the entrepreneur will earn maximum profit and their economic standard and growth will help possible. Incomes are rising and the density of a population in a rural areas is also showing a gradual increase. भारत रे डेंसिटी पॉपुलेशन हाई आमे जानि चंती वर्ल्ड रे. सो वर्ल्ड रे इंडिया रा पॉपुलेशन डेंसिटी मींस टोटल पॉपुलेशन लिविंग इन ए स्क्वायर किलोमीटर. गोटे वर्ग किलोमीटर रे बसवास करूथिबा मोट जनसंख्या को कहा जाए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बा जनसंख्यार घनता. ओडिया रे कहा जाए जनसंख्यार घनता. सो एई कंपैरिजन आमे देखिले चाइना दो नंबर 1 पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, but density population is high in India. China possesses on the vast geographical surrounding. China रो जो मानचित्र आमे देखिबा ओटा विराट geographical area, किंतु इंडिया रो geographical area बहुत small limited, whereas density of population is high. जनसंख्यार घनता होची high. Per square kilometer total population living is known as the density of population. गोटे वर्ग किलोमीटर जेतिकी जनसंख्या बसवास करूचंती ताको कहा जाए जनसंख्यार घनता. भारत रे प्राय देखा जाउची जे जनसंख्यार अर्बन एरिया रे मैक्सिमम मुख्यतः मेट्रोपॉलिटन सिटी मुंबई, चेन्नई, दिल्ली एंड कलकत्ता, बेंगलोर ये सब शहर मानकर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हाई. अपार्ट फ्रॉम दिस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड लाइक कैपिटल ऑफ द स्टेट्स and density of population is high. Simultaneously nowadays also in rural areas, village areas also there is high density of population. A few more facts and figures about the rural India. According to 2001 census, the number of rural household has grown 26 million in the last decade, 1991 to 2001. The joint family system is being replaced by the nuclear family system. आम देश रे देखा जाउची जे न्यूक्लियर सिस्टम फैमिली माने जॉइंट फैमिली हैज बीन फ्रैगमेंटेड इनटू न्यूक्लियर फैमिली, जार बाप मार जेते पुओ हेले से घर हला एवं विभिन्न जगह रे तांको इच्छा अनुसार वर्तमान एस्टाब्लिशमेंट फॉरेन स्टाइल लो एस्टाब्लिशमेंट होउचंती. सेमान आउ 51वर्ती परिवार जोडा कहंती ओडिया रे 51वर्ती बा जॉइंट फैमिली नॉर्म्स वर्तमान आम देश प्राय पलि गलानी. न्यूक्लियर फैमिली देखा जाउची. सो द ऑक्युपेशनल पैटर्न ऑफ रूरल हाउसहोल्ड shows a predominance of cultivators and wage earners. So occupational pattern देखा जाउची there is growing importance of the service sector. We know there are three important sectors in any country's economy. तीनोटी system of economy बा sectors of economy. गोटे होची प्राइमरी सेक्टर, सेकंड रहउची that is secondary sector, third रहउची tertiary sector और service sector बा third sector तक कहा जाए. So primary sector includes your agriculture, animal husbandry, fisheries and mines. ये गुडी कहउची प्राथमिक क्षेत्र रे अंतर्भुक्त.
Primary sector provides food, clothing, shelter. प्राथमिक क्षेत्र खाद्य वस्त्र बासगृह आमको जोगाई दउछि तेणु ताकू आमर नेसेसिटी अति जरूरी आवश्यक आमे परिपूर्ण करूचंती से एई जो नेसेसिटी आइटम गुडी का आमे पाउचंती कोठू ना कृषि क्षेत्र एग्रीकल्चर पशुपालन एनिमल हस्बेंडरी फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट रु एवं आमर कंचा माल पाउचंती खनि खादान माइंस रु सो दीज आर द प्राइमरी सेक्टर सो सेकेंडरी सेक्टर आमे जोठारु we fulfill our comforts and luxurious items luxurious wants हमर जोगुडा को आरामदायक विलास सामग्री द्रव्य गुडी को हमें सेकेंडरी सेक्टर रु पाई थाउ दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जोठी हमें पाउचु कोन कलर टेलीविजन रेफ्रिजरेटर एंड फैन एयर कंडीशन एवं व्हीकल्स टू व्हीलर फोर व्हीलर मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड व्हीकल्स एतद व्यतीत नानादी जिनस हम पाउचंती secondary sector to maintain our life in comfortable and luxurious way. So third sector the tertiary sector सेवा क्षेत्र जोटा कहंती जोटी कि हमें सेवा सोसाइटी बा मनुष्य समाज सेवा पाई थाए सेठी कोनोसी प्रोडक्शन होए नै the service sector like banking sector insurance and like law and order department and judiciary department police department जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ट्रांसपोर्ट सिस्टम ए थ्रू आमे सब सेवा पाई थाउ सो जहा देखा जाउची इंडिया रे वर्तमान देयर इज ग्रोइंग इंपोर्टेंस ऑफ दिस सर्विस सेक्टर सेवा क्षेत्र रे हमर लोक माने वर्तमान शिफ्टिंग करूचंती मैक्सिमम प्राइमरी सेक्टर रु सेकेंडरी टू सर्विस सेक्टर देखा जाउची हम इंडिया रे जे सेवा क्षेत्र ए जो विभिन्न वृत्ति संस्था गुडी को अधिक परिमाण रे नियुक्ति सुजोग जोगौछि सेवा क्षेत्र इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ग्रोथ हवा फल रे हमर कंप्यूटर ऑटोमेशन ए गुडी सब ग्रोथ हवा पर बहुत पिला आईटी सेक्टर मध्ये नियुक्ति पाउचंती सो रूरल व्हाट इज मार्केट जहा कोंती बाजार जे कोनसी समय रे जे कोनसी स्थान रे when there is a transaction held between the buyers and the sellers जे कोनसी स्थान केवल बाजार कहले हाट बाजार को बुझाए नाही बा शहर बाजार को बुझाए नाही जे कोनसी जगह रे जो समय रे जदि जने क्रेता विक्रेता गोटे ट्रांजैक्शन बा क्रय विक्रय करि थांती ताहा को बाजार बोली कहा जाय जे कोनसी स्थान at any moment any time so market is a place where transaction held between the buyers and the sellers. So rural market, a population of less than 400 per square kilometer, that also maximum people go to market and transaction as incurred or held between the buyers and the sellers. 75% of the male working population is involved in agriculture in our country. There is no municipality or board in the rural area. Hence, corporate India classifies location of as rural or urban based of the product category as a business strategy. FMCG product, faster FMCG mane faster moving consumer goods. Companies define any place with population if there will be transaction held between the buyers and sellers. That is known as the market. So NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development, defined. NABARD defined what do you mean by market? NABARD कहूची market कहले हमें को NABARD सेंस रे जोटा जातीय ग्राम उन्नयन बैंक जोटा अछि National Bank for Agriculture and Rural Development classifies any area which has a population is less than or equal to 10,000 to be a rural area. जोटा को रूरल एरिया कहा कहती नाबार्ड अनुसार जोठी 10,000 रु कम लोक संख्या जो अंचल रे बसवास करथांती सो ई भली रूरल एरिया को हमें डिफाइन करिबा सो रूरल मार्केटिंग कैन बी डिफाइंड एज अ फंक्शन दैट मैनेज all activities involved in assessing, stimulating and converting the purchasing power of rural consumers into an effective demand for specific products and services, among moving these products and services to the people in rural areas to create satisfaction
and a better standard of living and thereby achieving organizational goal. आमे better standard of living बा भल भावरे पहुंचीबा पाई गाँ गंडा अंचल रे जो बाजार घाट होई थाए आम मन मुताबक मन पसंदर जिनस गुड़िक आम गाँ गंडारू पाई थाउ so that the evaluation of rural marketing in India like phase 1 ने कौन हुए इवेंट सब कौन तादर अछि की इवेंट्स एंड ट्रेंड्स मार्केटिंग रूरल प्रोडक्ट्स फेज 1 ने कौन होची जे मार्केटिंग ऑफ रूरल प्रोडक्ट्स इन रूरल एंड अर्बन एरिया गाँ रे सेल करिबा एवं बाजार रे बा सहरांचल रे बिक्री करिबा एग्रीकल्चरल इनपुट्स इन रूरल एरियाज गाँ गंडा अंचल रे कृषिजात विभिन्न प्रकार कंचा माल को हमें व्यवहार करिथाउ प्रोडक्शन क्षेत्र रे so farming methods are primitive and level of mechanism was low पुराना कालिया ट्रेडिशनल आमे एग्रीकल्चरल फार्मिंग गाँ गंडा अंचल रे करिथाउ so markets were unorganized असंगठित बाजार गुडी को देखा जाए ये होची फेज 1 रे so फेज 2 रे हमर देखा जाउची जे 1960 रु 90 आड़े ये सब प्रथम फेज रे बिफोर 1960 फेज 1 रे बिफोर 1960 रे जोडा के एई भली सब आमे गाँ गंडा अंचल रे चाषबास करूथांती एवं रूरल मार्केट रे आमे क्रय विक्रय करूथांती फेज 2 रे होची 1960 रु 1990 भितरे कोन सब होतला ना ग्रीन रिवोल्यूशन होईची सबुज विप्लव आरंभ होईची प्रॉस्पेरिटी इन द रूरल हार्टलैंड बहुत डेवलपमेंट होईची 1960 रु 1990 भितरे डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल इनपुट्स इनक्रीजेस विभिन्न प्रकार चाहिदा कृषिजात इनपुट गुड़िक फैक्टर गुड़िक बहुत परिमाण रे पावर टिलर ट्रैक्टर सार विष कीटनाशक मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऊपर बहुत डिमांड बढ़ी देखा जाइए 1960 रु 90 भितर सो आउ कौन होइछि ना कंपनीज लाइक महिंद्रा आइचर श्रीराम फर्टिलाइजर इफको ए गुड़िक सब ग्रोथ होइछि डेवलपमेंट होइछि सार प्रस्तुत करबा एवं विभिन्न प्रकार टेक्नोलॉजी मध्य महिंद्रा टेक्नोलॉजी एचआर टेक्नोलॉजी ए जो ट्रैक्टर सब कंपनी सब बाहरी चंती कृषिजात कृषि को चाषबास को मॉडर्न टेक्नोलॉजी जोगाया पई महिंद्रा कंपनी डेवलपमेंट करिछि विभिन्न प्रकार मॉडर्न टेक्नोलॉजी एचआर कंपनी मध्य डेवलपमेंट करिछि तापरे फर्टिलाइजर प्लांट सब ग्रोथ करिछि इफको सार मध्य एक्सपांड करिछि लोक माने सार ट्रैक्टर पावर टिलर प्रति मध्य अक्वेंटेड अछन सो एग्रीकल्चरल इनपुट्स marketing emerged as a sector. Rural products were also marketed through agency like KVIC. एगुड़ा सब आमर बहुत 1960 रु 90 भितर बहुत प्रकार डेवलपमेंट है तापरे फेज 3 रे देखा जाइए 90 रु ऑनवर्ड्स प्रेजेंट डे पर्यंत 1990 रु फेज 3 रे 90 रु ए पर्यंत कौन देखा जाइए demand for consumables and durable goods are rises consumables goods and durable goods होची जोडा का लॉन्ग लास्टिंग दीर्घस्थायी द्रव्य गुडी का हमर डिमांड बढ़ीची लाइक ड्यूरेबल गुड्स लाइक आयरन ओर एंड स्टील एंड मशीन टूल्स एंड लाइक योर एग्रीकल्चरल मशीन टूल्स पावर टिलर ट्रैक्टर एवं सोइंग मशीन्स कटिंग मशीन्स आ ऊपर सब ड्यूरेबल गुड्स ऊपर हेवी डिमांड बढ़ी इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन रूरल एरियाज कंपनीज फाइंड ग्रोथ इन अर्बन मार्केट्स स्टैग्नेटिंग और फॉलिंग विभिन्न प्रकार ग्रोथ अर्बन एरिया मध्य मार्केट्स रा बढ़ी एवं बेले बेले मध्य स्टैग्नेट हो जाइछि बा स्थैतिक अवस्था देखा जाइछि कंपनीज फोकसेस ऑन रूरल मार्केट्स दिस फेज हैज लेड द इमर्जेंसी ऑफ कॉर्पोरेट रूरल मार्केटिंग बड़ बड़ कंपनी मध्य गाँ गंडा अंचल को फोकस करिसंती गाँ गंडा अंचल रे विभिन्न प्रकार इनपुट्स जोगै करी किभली क्षुद्र एंटरप्राइज सृष्टि हबो ता प्रति मध्य ए कंपनी गुडी को सब फोकस करिसंती सो से अनुसार गाँ गंडा अंचल रे विभिन्न प्रकार टेक्नोलॉजी मध्य वर्तमान एप्लीकेशन हेउची सो मार्केटिंग रिसर्च ऑप्शंस वर्तमान देखा जाउची जे मार्केटिंग रिसर्च मध्य सब करा जाउची
किभली ना प्राइमरी मार्केट रिसर्च दैट इज इन डेप्थ इंटरव्यू करा जाउची कृषि क्षेत्र रे सो प्राइमरी मार्केट रिसर्च किभली करा जाउची जे विभिन्न अंचल रे गाँ गंडा अंचल को अंचल रे कौन सब प्रोडक्शन करा जाउची एवं चासी माने किभली सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी फैक्टर सब यूज करूचंती तापर सब रिसर्च करा जाउची इन प्राइमरी मार्केट रिसर्च डाटा इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेक होल्डर बी इट ए कस्टमर होंतु बा सप्लायर होंतु बा सर्विस प्रोवाइडर होंतु सब आडू डाटा सब कलेक्शन करा जाउची so this type of research can either be exploratory or specific in the case of the former an unstructured format is followed where detailed answers are shoot items responded for example you may ask a vegetable vendor to explain the last 10 transactions that have occurred at his shop or stall. Question explanatory research are on a open-ended nature. So आमे पचारिबा जे लास्ट 10टा ट्रांजैक्शन रे जेतबेला आमे डाटा कलेक्शन करूचंती वेंडर होंतु सेलर होंतु कस्टमर होंतु जे लास्ट 5 दिन रे बा 10 डेज रे कोन सब बेसी डिमांड हेछि को प्रोडक्ट ऊपर से मान आंसर देबे सेही अनुसार प्रोडक्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड इन रूरल एरिया is purchased by the vendor and if there will be heavy demand on that particular product so that the government will give in importance to produce more and more in rural areas. Baseline survey re raw material availability कौन सब प्रॉब्लम फेस करूचंती रूरल अंचल रे विभिन्न प्रोड्यूसर होंतु बा एंटरप्रेन्योर होंतु रॉ मटेरियल ठीक रे अवेलेबल होउची कि ना नाही नंबर ऑफ आउटलेट्स केते आउटलेट अछि केते एंटरप्रेन्योर अछंती एंड इन्वॉल्वड इन द प्रपोज्ड लाइन ऑफ एक्टिविटी मार्केट अवेलेबिलिटी एट द विलेज एरिया तालुक एरिया मार्केट अवेलेबल अछि कि ना नाही सोर्सेस ऑफ फाइनेंस से माने कोठर सब फाइनेंस बा लोन बा क्रेडिट सब कलेक्शन करूचंती इत्यादि सो ग्रुप फोकस मध्य एपीजीडी फोकस ग्रुप डिस्कशन आल्सो हेल्ड when primary market research under primary market research focus group discussion also held in rural area विभिन्न गोटा ग्रुप करिकरी आमे ग्रुप लोकन को 5-10 जन बसै करी ताको विभिन्न प्रकार गाँ गंडा अंचल रे विषय रे चाष बास होंतु बा विभिन्न प्रोडक्ट रो डिमांड ऊपरे बा कोन सब चासी माने सब प्रोडक्शन करूचंती ताको ठरो आमे क्वेश्चनर नेथिबा ताको जा पचारिबा से अनुसार से माने आंसर देबा हम क्वेश्चनर रे पुट करिबा से अनुसार आमे टोटल एग्रीगेट गोटा जिल्लार आमे पाई परिबा समग्र जिल्लार डाटा कलेक्शन होगा परे अल्टीमेटली हम राज्यर पाई परिबा सो सब राज्य को नेकी गोटा देशर मध्य डाटा कलेक्शन होई परिबो देयर आर सेवरल टूल्स एंड टेक्निक्स दैट कैन बी यूज्ड सम ऑफ द इंडिकेटिव लिस्ट लाइक सोशल मैपिंग रिसोर्स मैपिंग सीजनल डायग्राम विभिन्न प्रकार वेन डायग्राम आमे प्रस्तुत करिकरी ये जो डाटा गड़ाक आम कलेक्शन कले गाँ गंडा अंचल को ताकू शो कर परिबा विभिन्न प्रकार सोशल मैपिंग करबा जो माने डायग्राम ग्राफ माध्यम रे चित्र देखै परिबा धर ओडिसा रो हमके अंचल रे प्रचुर परिमाण रे माने कोन राइस प्रोडक्शन होए ओडिसा रो केन्दुझर जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट गुडी को अछि केन्दुझर हो फुलबाणी हो बा सुंदरगढ़ हो मयूरभंज हो ए सब डिस्ट्रिक्ट रे कौन सब बेसी प्राधान्य दिया जाउची बा कुटीर शिल्प कौन सब कुटीर शिल्प कौन सब प्रोडक्शन करा जाउची एवं चाषबास रे कहा ऊपर अधिक गुरुत्व दिया जाउची आमे डाटा अनुसार कलेक्शन करिकरी ताकू मैपिंग डायग्राम रे हम कलर रे हम देखै परिबा सो पॉइंट्स रिमेंबर कंडक्टिंग ऑफ प्राइमरी डाटा बा रिसर्च डाटा कलेक्शन कला बेले कहा पर हमको ध्यान देबा पई पड़ी थाए द प्राइमरी रिसर्च बीइंग कंडक्टेड इन सोशली एक्सेप्टेबल location where caste tension and feelings do not run high जोठी की बहुत बड़ा अछंती कास्ट सिस्टम सब थाए सो लोक फीलिंग्स करंती समटाइम्स जदी रिसर्चर बा एनुमरेटर बा इन्वेस्टिगेटर डाटा जेतेबेले कलेक्शन करे से कहा को कास्टिज्म फील करी से बली इंडिफरेंट करी डाटा कलेक्शन करबा उचित यूनिवर्सली सार्वजनीन हिसाब रे हम सब डाटा लोकन कलेक्शन करबा से
अमुके कास्ट से शेड्यूल कास्ट सी शेड्यूल ट्राइब तथ्य मिल नहीं सी जनरल कास्ट सी सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड सी ब्राह्मण कास्ट ये आम मेंटेन करने उचित नुह यूनिवर्साली सार्वजनीन भाव में सबू लोक आम तथ्य कलेक्शन करने उचित इज इट एक्चुअली एक्सेप्टेबल टू इंटरैक्ट विथ अन accompanied women and girls in a location under consideration जो तथ्य में जाउचंती इवन वुमेन मान पाखर मध्य डाटा कलेक्शन करबा उचित टाइम कांटेक्ट ऑफ द आइडियल टाइम ऑफ कांटेक्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट मस्ट बी मेंटेन को समय रे लोक माने अवेलेबल हे परिबे सो आइडियल टाइम कांटेक्ट मस्ट बी फोकस्ड नल तो लोक मिलिबे नहीं गां गंडा अंचल रे किए जॉब को जाइथिबो किए कुआडे जाइथिबे किए कर्म क्षेत्र को जाइथिबे किए चाषबास को जाइथिबे सो आइडियल टाइम मस्ट बी फॉलो बिफोर कॉन्टैक्टिंग टू द रेस्पोंडेंट बा हाउस होल्ड सेक्टर्स व्हाट इज द बेस्ट सैंपलिंग मेथड दैट कैन बी फॉलोड जोटा कि भलो सैंपलिंग मेथड आमे सेही प्रकार तथ्य हिसाब रे सेही प्रकार सैंपल को फॉलो करबा उचित हमर अछि रैंडम सैंपलिंग स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग कोटा सैंपलिंग विभिन्न प्रकार सैंपलिंग अछि सैंपलिंग कौन ना टोटल पॉपुलेशन रु आमे किछि परिमाण नेगिरी आमे सैंपलिंग कलेक्शन करि थाउ धर गोटे हांडी रे भात फुटुची तादरु दीटा सैंपल नेगिरी आमे चिपी देले जानिबा भातटा हेइ गलानी कि ना नाही सो दैट इज द सैंपलिंग टेक्निक टोटल राइस इज नोन एज योर पॉपुलेशन सो व्हेन वी कलेक्ट फ्यू राइस दैट इज योर सैंपलिंग सो रैंडम सैंपलिंग हो पारे स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग हो पारे कोटा सैंपलिंग हो पारे विभिन्न प्रकार सैंपलिंग अछि हमें जो सैंपल टाको नबा फॉर आवर इंफॉर्मेशन सो ये सब होची प्राइमरी तथ्य कलेक्शन नो बाट प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड्स सो सेही बळी सेकेंडरी डाटा मध्य कलेक्शन करा जाय सो प्राइमरी डाटा इज डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द हाउसहोल्ड सेक्टर्स बाय द इन्वेस्टिगेटर जो माने गवेषणा करूचंती बा तथ्य कलेक्शन करबा पई क्वेश्चनर नै कि जाउचंती विभिन्न गां गंडा अंचल को घरोई डाटा कलेक्शन करबा पई दैट इज नोन एज द प्राइमरी कलेक्शन ऑफ डाटा प्राइमरी मेथड सो आ गोटे अछि सेकेंडरी मेथड सब विभिन्न ऑफिशियल आमे सब तथ्य पाइथम जहा ऊपर आमे गवेषणा करूचंती सो दैट we should proceed to that offices and collect the data ताको जे सेकेंडरी डाटा विभिन्न ऑफिस रु जो डाटा सब कलेक्शन करा जाय ताको बुझा जाय सेकेंडरी मेथड सो प्राइमरी मेथड अछि सेकेंडरी मेथड अछि हमें सपोज if we interested to collect the information from the household sectors about the livestock population लाइवस्टॉक पशु पालन पर तथ्य कलेक्शन करबा केते लोक गां गंडा अंचल रे गाई गोरु रखिचंती छेली मेंढा रखिचंती कुकुड़ा चाष लाइवस्टॉक पर हम तथ्य कलेक्शन करबा हमें डायरेक्टली वी कैन प्रोसीड टू द विलेज एंड कांटेक्ट विथ द हाउसहोल्ड सेक्टर्स घरे घरे बुली करी गोटा विलेज को गले गोटा पंचायत को गले पंचायत रु धर गोटा पंचायत रे सपोज 10टा विलेज अछि 10टा विलेज रु हमें 3टा विलेज सैंपल नै गले से 3टा विलेज रु हमें कलेक्शन करले डायरेक्ट by the direct questionnaire method that is known as the primary data collection method so secondary से लाइवस्टॉक ऊपर पशुपालन ऊपर आमे सेकेंडरी सेक्टर मध्ये तथ्य कलेक्शन कर परिबा केमिति वी कैन प्रोसीड टू वेटरनरी ऑफिसेस प्रत्येक जिला स्तर रे गोटे सीडीएम ऑफिस सीडीवीओ ऑफिस अछि चीफ डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफिसेस जिला मुख्य पशुपालन विभाग जोटा गोटा अछि सो सेति की गले ब्लॉक वाइज विभिन्न प्रकार तथ्य पाई परिबा कारण आमे डाटा कलेक्शन करछथि पशुपालन ऊपर लाइवस्टॉक ऊपर केते लोक माने अलाइड एक्टिविटी रे एंटरप्राइज करिसंती बा फार्म करिसंती गाई फार्म करिसंती छेली फार्म करिसंती कुकुड़ा फार्म करिसंती इत्यादि आमे डायरेक्ट ऑफिस रे जाई कलेक्शन करबा एटा सेकेंडरी मेथड कहीं कह जाउची बिकॉज द डाटा इज कलेक्टेड बाय द ऑफिशियल्स मेंबर्स ऑफिशियल स्टाफ
So CDVO office collected from different veterinary offices that existing in rural area. गाँ गंडा अंचल बहुत अच्छी आमर सब भेटनारी ऑफिस पशुपालन विभाग ऑफिस अच्छी तापर से डाटा से माने कोड पाई थांती ना से माने पाई थांती हाउस होल्ड सेक्टर रु कार केते गाई गोरु छेली मेंढा अछि केते के कुकुड़ा चाष करूची से माने कोन करंती तथ्यटाकू डायरेक्ट कर दियंती सीडीवी ऑफिस चीफ डिस्ट्रिक्ट भेटनारी ऑफिस को से माने पठे दियंती तणु चीफ डिस्ट्रिक्ट भेटनारी ऑफिस को गले हमें गोटे जिला वाइज तथ्य हमें पाई परिबा सो ताधर अछि विभिन्न प्रकार पंचायत ऑफिस अछि द इंडियन रीडरशिप सर्वे अछि मार्केट एंड रिसर्च टीम अछि एठी सब डिपार्टमेंट अछि हमें सेठ सब जाई डाटा कलेक्शन करि परिबा सो रूरल प्राइसिंग एंड प्रमोशन इश्यू गांगडा अंचल रे दरदाम एवं प्रमोशन विभिन्न प्रकार प्रोडक्ट चाषबास ऊपर किभଳି प्रमोशन हबो ता ऊपर हमें फोकस करिबा so promotion what do you mean actually promotions are marketing efforts desired and designated to generate immediate interest in purchasing a product or services including coupons sales discount premium contests and events promotions are marketing efforts and designed to generate immediate interest in purchasing to the rural people. We should motivate to the rural people that how the promotional goods must be, commodities must be demanded and that they can use in their activities, in entrepreneurial activities, in agricultural farming sector, etc. In many cases, rural entrepreneurs are not able to engage in certain promotional efforts. The reason for this are many. They may not have sufficient financial resources. Rural entrepreneurs may not have exposure to best practices and techniques or promotion. जो एंटरप्रेन्योर मान अछंती बा विलेज इंडस्ट्री बा कॉटेज इंडस्ट्री जो मान सब करिसंती से मान सब जानि पारंती नाही से मान बिकॉज़ दे हैव आल्सो नॉट having sufficient finance to purchase the promotion goods and commodities that will help to raise their income levels so that rural products have to compete with urban products on price and quality parameters. If an entrepreneur is planning to set up a food processing unit, there will be a number of challenges and issue like जणे जदि फूड प्रोसेसिंग यूनिट जदि गाँ गंडार अंचल करिवो फूड प्रोसेसिंग यूनिट से अनेक प्रकार प्रॉब्लम फेस करि थाए कोन हाउ विल एंटरप्रेन्योर एक्सटेंड द सेल्फ लाइफ फॉर द प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन करूची सपोज मिल्क प्रोडक्शन करूची गाई फार्म रखिची बा कुकुड़ा फार्म करिची से चिकन पार्लर कोड करिवो एवं किभଳି सेल करिवो एवं अन्यान्य जदि प्रोडक्ट बा वेजिटेबल चाष करूची बा विभिन्न फूड ग्रेन प्रोडक्शन करूची ताको किभଳି से सेल द लाइफ ऑफ प्रोडक्ट बिकॉज़ ऑल दीज आर द पेरिसेबल गुड्स नष्टशील बा पचनशील द्रव्य दीर्घ दिन पर्यंत रहि परिबोनी सो हाउ टू मेंटेन द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट जदि स्टोरेज फैसिलिटी थिबो ताल सेगडा सब रखि परिबो सेगडा ऊपर ध्यान देबा पय पड़ी थाए हाउ विल हाइजीन स्टैंडर्ड्स बी मेंटेन भलो उन्नत मानर किभଳି सेटाକୁ मेंटेन करिक रखिबो व्हाट आर द न्यू टेक्नोलॉजी दैट हैव टू बी डिप्लॉयड नुआ नुआ टेक्नोलॉजी वैषयिक ज्ञान से किभଳି व्यवहार करिवो हाउ डज द एंटरप्रेन्योर रेज रिसोर्सेस फॉर प्रमोटिंग हिज और हर प्रोडक्ट्स नेशनली और इंटरनेशनली किभଳି तार रिसोर्सेस संबल बढ़िबो से जो प्रोडक्शन करूची गुड्स कमोडिटी किभଳି जातीय स्तर रे अंतर्जातीय स्तर रे यार डिमांड हेवी हबो हाउ टू मैक्सिमाइज द सेल्स सो इफ द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स विल help possible so that product will be demanded heavily and profit automatically maximum achieved by the entrepreneur. How can the entrepreneur improve the price realization? वास्तव प्राइस किभଳି से पाई परिबो बाजार रुबा कस्टमर ठाकुर किभଳି से वास्तव रे भलो दाम रे से किभଳି पाई परिबो जा फल रे
तार प्रॉफिट टिके अधिका निश्चित भाव रे आसीबो. So understanding the pricing objective कौन सब किभଳି से अंडरस्टैंड करिवो. सेल्स ऑब्जेक्टिव, the marketer may have some objectives. Understanding the pricing objective. So pricing objective is sales objective first. The company will use price to gain to certain market share. This strategy is used by FMCG companies by engaging in price wars like those witnessed in the detergents, cola and toothpaste markets. This is strategy that even a small entrepreneur may have to adopt. Sales objective. So that means the like Coca-Cola ho, ba toothpaste ho, ba detergents powder ho, how the maximum demand today nowadays is held by the consumer because it is FMCG product, faster moving consumer goods, जोड़ा daily लोकंगर कामरे आसी थाए, दरकार आसी थाए. सही बोली जितने sales हबो, sales objective is that the modern business technique is that how to maximize the sales. This is must be fast focused maintained by the entrepreneur. जदि दर दाम को माने टाइट करी धरिबा with minimum selling maximum profit, a time will come the business will ruined, the enterprise will shut down. जदि ता माने जने एंटरप्रेन्योर कौन करिवो, एंटरप्रेन्योर जे सेलर जे प्रोड्यूसर मध्य से हला. तबे जदि जने एंटरप्रेन्योर चाहिबो मु प्रचुर अधिका लाभ रखिकरी मोर कम बिक्री हो, दिस इज नॉट द मॉडर्न बिजनेस टेक्निक. मु गतकाली आलोचना करथि. द मॉडर्न बिजनेस टेक्निक इज दैट सेल्स मैक्सिमाइजेशन. जिते बिक्री करिवो विथ मिनिमम प्रॉफिट, कम लाभ रखिकरी जे जिते अधिक सेल करिवो, सो अधिक सेल हेले अल्प अल्प लाभ आसले प्रचुर लाभ पड़ी आसीबो. आउरी कोन बेनिफिट हबो ना, customer demand and customers likingness for that entrepreneur product also increases. उपभोक्ता माने अधिक से प्रोडक्ट प्रति तार वीकनेस बढ़िबो, जे कम रेट रे हम पाई परछु, भलो क्वालिटी गुड्स पाई परछु. So automatically the business will run for the long term purposes and expanded the branch. Automatically the branch will expand. So business will continue lifelong process, lifelong हिसाब रे बढ़ी चलिबो long term purpose. So profit objective, the company will aim at to maximization of a profit and optimizing the return on investment. So maximization of profit केतेबेले हबो, जेतेबेले हमर सेल्स मैक्सिमाइजेशन हबो. कारण गोटिए प्रोडक्ट रे हम देखुचंती वेराइटीज ऑफ कंपनी एज आर देयर. गतकाली हम जोटा आलोचना करथिले. So there are numbers of competitors in the market, so that we should maintain a minimum profit with maximization of sales objective. That is the modern business technique. So competition objective, the company will use price to meet the challenge of the competition or to even destroy the competition. Anchor toothpaste, for example, Anchor toothpaste used price as a weapon to take established players on the 100% vegetarian platform. Anchor company कौन करछि, ताधरे देखुछि 100% vegetarian plant. विभिन्न प्रकार एडवर्टाइज करिथांती because competition are there. So विभिन्न प्रकार एडवर्टाइज करिथांती, प्राइस रिडक्शन करिथांती, ताधरे कूपन सब छाडिथांती जे एई पेस्ट रे कूपन अछि, प्राइस अछि. That means how to attract the customers. So that maximization only sales help us. Advertisement is also one of the aspects to maximize the sales. And then market development. Pricing can also be used to develop the markets. There are several examples such a pricing objective. Britannia launched packets at several low price points like rupees 1, 2, 4 to expand the market
or business biscuits. So कौन करा जाउची आजिकल देखुथिबो बल्क साइज रो प्रोडक्ट गुडी को बिक्री करथले वर्तमान माइक्रो साइज रो स्मॉल साइज रो पैकेजिंग करी जो बिक्री होची स्मॉल साइज रो पैकेज कारण लोक माने प्रचुर परिमाण रे एका बेले बहुत किनी देले नष्ट होई जीवो तेणु क्षुद्र क्षुद्र पैकेजिंग साइज सिस्टम करके लेबलिंग पेस्ट करके बाजार को छाड़ले जार जो साइज रो दरकार से सही साइज रो प्रोडक्ट किनी परिबो एवं कैपेबल अफोर्डेबल प्राइस will be given to the consumer so that maximization sale will also help possible. So demand for the product or service. So price sensitive can be low under the some of the important circumstances. Normally demand and the price are inversely related. This happens due to price sensitive. The elasticity of demand plays a vital role here. So elasticity of demand means, as we know, that how the product will be demanded heavily. So elasticity of demand means contraction and expansion. When price is contracted or price declines in the market, quantity demand expanded. When price in the market declined, quantity demand expanded. So elasticity of demand is high for the product. Secondly, if price in the market increases, elasticity of demand contracted. यदि बाजार दाम यदि उच्चा हो जीवो ताले चाहिदार परिमाण संकुचित हो जाए कंट्रैक्शन हो जीवो हैला सो कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन इज नोन एज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट डिपेंड्स ऑन द प्राइस फैक्टर गतकाली हम आलोचना करथले विषय रे प्राइस फैक्टर सो द प्रोड्यूसर ऑलवेज फिक्सेस द प्राइस अकॉर्डिंग टू देयर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन cost of production determine the price per unit of the product. गोटिए प्रोडक्ट रो यूनिट तार खर्च ऊपर डिमांड डिपेंड करि थाए सो प्राइस एवं डिमांड सेटा अलगा फैक्टर सो मार्केट डिमांड अनुसार बाजार दाम अनुसार मार्केट डिमांड ता फ्लक्चुएट होता है परिवर्तन होता है बाजार रे जब दाम उच्चा रहिला so quantity demand inverse habo mane kami jibo bazar there is a high price for the product so quantity demand declines and if price is low quantity demand expanded increases that means there is inverse relationship between price and quantity demand that means again indirect relation bazar dam एवं क्वांटिटी डिमांड रे अपोजिट डायरेक्शन रे सेमाने गति करि थांती किंतु जने विक्रेता प्रोड्यूसर कोन करे से पर यूनिट प्रोडक्ट किबली प्राइस डिसीजन लिए अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ही फिक्सेस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बट द कंज्यूमर जने उपभोक्ता जने प्रोड्यूसर बा सेलर कोन करे से खर्च अनुसार गोटे प्रोडक्ट रो केते दाम रे खर्च तार खर्च हला से अनुसार से दाम फिक्सेशन करि थाए बट द कंज्यूमर ऑलवेज डिसाइड टू पे प्राइस अकॉर्डिंग टू हाउ मच यूटिलिटी ही विल डिराइव जने उपभोक्ता कोन करे केते परिमाण रो उपयोगिता सेही प्रोडक्ट रो से पाई परिबो देन ही रेडी टू पे द प्राइस जने सेलर कहूची जे मोर एटा 12 टंका हेले मु ताकू 10 टंका रे मोर होची कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आउ 2 टंका रखि कि मु 12 टंका रे सेल कले मु 2 टंका पर यूनिट प्रॉफिट करिवि उपभोक्ता कोन कहूची ना 12 टंका हे गेला को यूटिलिटी बा उपयोगिता 12 टंका रे पाइबी नाही तेनु इफ आई विल पे ओनली 11 रुपीस टू द सेलर और टू द प्रोड्यूसर देन 11 रुपीस इज इक्वल विथ माय यूटिलिटी से 11 टंका होची मु प्रोडक्ट जोटा व्यवहार करिवि 11 टंका सहित समान है जो मोर उपयोगिता जति कि मु ता दरु डिराइव करिवि यूटिलिटी सो दैट और सैटिस्फैक्शन देन आई एम रेडी टू पे द प्राइस
per unit 11 rupees. So bargaining held between the buyers and the sellers automatically. So a particular price is fixation held. But a nirdiଷ୍ଟ ଦାମ ବଜାରରେ ସ୍ଥିର ହୁଏ. That is action and reaction between buyers and sellers. There is action and reaction between buyers and sellers. Finally, a particular transaction is held at a particular price. Here, the buyers have little knowledge, sometimes substitutes. Expenditure is a small part of consumer income, like salt or other products, or like chili products. Part of the cost is borne by another party. The product is used with another previously bought assets. The product is perishable like milk or fish. So, this kshetre demand for the products always changes. Estimating cost of production. Cost of production kibhali estimate kara jaye? The organization need to ask itself some of the questions. What are the fixed costs that have to be incurred? What are the variable costs that have to be incurred? What is the total and average cost of production? What is the learning curve of the organization? So cost ta kimti ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରା ଯାଇଥାଏ ନା ଫିକ୍ସଡ କଷ୍ଟ ଭାରିଏବଲ କଷ୍ଟ. ଆମେ ଗତକାଲି ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଗରୁ ପଢୁଥିଲେ fixed cost variable cost. So fixed cost is the fixed factor derived from the fixed factor. Fixed factor like land, building, heavy machine tool, top managerial activities are belongs to the fixed factor. So fixed factor ru fixed cost derive kara jaythay. So variable factor like that is used or working capital jodha daily uses like labor, raw materials, energy, water, sanitation and other chemicals इत्यादि एगुडी सब डेली बेसिस रे व्यवहार होता है दरकार पड़ता है. गोटे प्लांट हो बा एंटरप्राइज हो बा फार्म सेक्टर हो, फिक्स्ड कैपिटल इज देयर and simultaneously we require the entrepreneur also require the variable factors. So we can derive the two types of costs, that is fixed cost from the fixed factor and variable cost from the variable factors. As केतेबेला हम जानिबा जे production or income will increase, how will determine that our income will grow automatically? If there will be more and more requirement of the variable factor during the process of production. Production क्षेत्र रे जेतेबेला process production smoothly चलीथिबो run करिथिबो, when there is requirement of the more and more of the variable factors. Production जेतेबेला smoothly run करूथिबो गोटे product जेतेबेला अधिका श्रम, लेबर, कंचामाल एवं कैपिटल, अदर कैपिटल, केमिकल्स जहाँ सब सपोज दरकार हुए, जदि अधिका अधिका डिमांड करा गला बा एंटरप्रेन्योर अधिका ऐड कला विथ द फिक्स्ड फैक्टर, so that more and more profit will accrue to the entrepreneur. कारण हमर जति फिक्स्ड फैक्टर अछि लैंड, बिल्डिंग, हेवी मशीन टूल, टॉप मैनेजरियल एक्टिविटीज, से समय प्रोडक्शन जोर चलीची, तेणु श्रमिक अधिका दरकार होची एवं कंचामाल अधिका दरकार होची, से अनुसार मशीन टूल चलीबा पई एनर्जी दरकार होची, ता माने प्रोडक्शन स्पीडीली कंटिन्यू खूब जोर रे प्रोडक्शन चलीची, ता माने that means profit become more and more automatically, revenue will come more and more because variable factors, the entrepreneur demanding more and more, and ultimately there is heavy demand on the product in the market automatically. प्रचुर एतल प्रोडक्शन हबो ता माने हमें जानिबा जे heavy demand product ऊपर अछि, तेणु variable factor require more and more to add with the fixed factor. So fixed cost slowly decline automatically. स्थिर परिबेटा धीरे धीरे खर्च कमी जाए, जोटा आगुरु एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट करि थाए, लैंड परचेज कर थाए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करि थाए, हेवी मशीन टूल इंस्टॉल करि थाए, प्रोडक्शन हवा पूर्व जने दि जन पोस्टिंग दे थाए जॉब रे, ए सब ताकू ओवरहेड कॉस्ट ताकू फेस करिया पड़ि थाए. सो प्रोडक्शन हेले
variable factor टा अधिका अधिका दरकार पड़े so rural pricing रे केते गोटे important aspect रहउची simple packaging system रे building value in packaging highlight value गोटा product को केमते highlight करबा product performance warranty quality customer support एगुडी को सब प्राय देखा जाने थे रूरल एरिया रे तो एगुडा को लोक मानक मध्य रे रूरल एंटरप्रेन्योर मान मध्य रे हमें सब सचेतनता बा अवेयरनेस क्रिएट करबा पई पड़िबो सो लाइक नेटवर्क्स एंड पार्टनरशिप इन रूरल मार्केट्स नेटवर्क पार्टनरशिप किभली रूरल मार्केट रे केमते हेई परिबो हमर गोटे अछि नाबाडा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जातीय ग्रामोन्नयन एवं ग्राम्य विकास बैंक जोटा अछि is the apex development bank with a mandated for facilitating credit flow ये सब स्पेशली क्रेडिट सब देई थाए गां गंडा चासी इत्यादि एवं जो माने गाई गोरु छेली मेंढा कुकुडा चाष सब करूछंती नाबाडा माध्यम रे अलाइड नाबाडा provides sufficient financial assistance to the allied activities entrepreneur or farmers and developmental agriculture and simultaneously small scale industry cottage industry village industry, handicrafts and other rural crafts. The bank has come out with a large number of schemes. Vibhinna prakar scheme achi bank ra nabada ra for the promotion of small scale industry and venture in the agriculture and allied sectors. So, ame directly nabada ru ani pariba nai. Kali jemiti iye pachar thala question korthala. Nabada ru ame direct ani pariba nai. Nabada kon korchi DRDA डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी अछि डीआरडीए माध्यम रे माने कैपिटल सब सैंक्शन करि थाए ताल सेटा कहा पाखर रहे ना बैंक पाखर रहे लीड बैंक पाखर रहे प्रति जिल्ला रे गोटे लेखा लीड बैंक अछि लीड बैंक रहिला कैपिटल रहिला किंतु हमें डीआरडीए माध्यम रे हमें कोबोली प्रोजेक्ट करिबा एस्टैब्लिश करिबा हेलो सर we can't hear you कोबोली प्रोजेक्ट सब हमें एस्टैब्लिश करिबा पई चाहउचंती से अनुसार डीआरडीए फंड सैंक्शन करि थाए थ्रू ब्लॉक तापरे ट्रेनिंग सिस्टम डीआईसी माध्यम रे ट्रेनिंग डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर हो बा अन्य क्षेत्र रो ट्रेनिंग तापर दिया जाए तापरे लोन सैंक्शन होए तार एप्लीकेशन प्रोसीजर सब थाए हेंस scheme for setting up agri-link and agri-business centers. This scheme will enable agricultural graduates to become entrepreneur. It is envisaged that these centers will provide extension services, complement the technology transfer efforts and respective state government. NABARD comes out with model bankable projects which can be used as a framework for potential entrepreneurs to develop their ventures. NABARD also offers subsidy. NABARD madhya subsidy deta hai for a host of ventures in the rural farm and non-farm sectors. NABARD madhyamare bahut subsidy mili thai. जो माने young mass चाहउचंती enterprise करिबा पई बहुत प्रकार भीतर पसिले प्रैक्टिकल चित्रटा हमें देखि परिबा तेनु सेति पई हमको अटेम्प्ट नबा पई पड़िबो जोथ पई कहा जाय छै आगुरु पढैतली एंटरप्रेन्योर must take bold step and risk responsibly for the business. The entrepreneurs must having foresightness. ये गुडी को सब गोटे उद्योक्ता पाखरे थिले से ऑटोमेटिकली पॉसिबल गोटे एंटरप्राइज से एस्टैब्लिश करि परिबो 50-100 लोकन केतोड एक्सपांड करबो नियुक्ति सुजोग देई परिबो 50-100 लोकनकर इनकम रिसोर्स एक्सपांड करि परिबो इंक्रीज करि परिबो सो कोन दोछि नबाडा सब लाइक कैपिटल सब्सिडी स्कीम फॉर सेटिंग अप कोल्ड स्टोरेज जने चाहिबो जदि कोल्ड स्टोरेज गांगो नाचर करिया पई से सब्सिडी मध्ये पाइबो सो गवर्नमेंट सब दोछि यादर फैसिलिटी बहुत प्रकार दोछि को कोल्ड स्टोरेज दवा पर चासी माने उपकृत होबे गांगो नाचर एंड ओनियन गो डाउन्स ए वेंचर कैपिटल फंड फॉर प्रमोटिंग एंटरप्राइजेस इन द डायरी एंड पोल्ट्री सेक्टर डायरी फार्मिंग करबा बा गो पालन करिके डायरी फार्मिंग करबा पोल्ट्री कुकुड़ा चाष करबा एथि पई बहुत लोन दोछि हमें पसिले जानि परिबा ता भीतर प्रैक्टिकली चित्रटा हमें जानि परिबा
region specific horticulture development scheme सब अच्छी horticulture जोड़ा सब आमे विभिन्न प्रकार फल चाष करिबा एवं फूल चाष करिबा ता पई मध्य सरकार लोन दउचंती for example such a scheme is in operation in your district in 4 district of Bihar रे मध्य ये सब प्रचुर परिमाण रे फैसिलिटी नाबाड़ा दउछ तापर scheme for developing strengthening of agricultural marketing infrastructure grading and packaging system आकु सब मध्य नाबाड़ा स्कीम पठौछ तापर आउरी अछि कोन सेति पई बैंक सब अछि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI जोटा कहा जाउछि SIDBI established during 1990 on an act of parliament. The SIDBI has a scheme for new and existing enterprises or entrepreneurs. जो नुआ एंटरप्रेन्योर हो परिबो बा पुराना एंटरप्रेन्योर जहार प्लांट गुडी को सीक हे गलानी रुगुण हो पड़लानी ताको रिवाइव करबा पई SIDBI लोन दोछि It has a specialized micro enterprise development scheme that is being extended to microfinance agency. A SIDBI foundation of a micro credit has also been set up for this purpose. So आउर कोन अछि ग्रामश्री मेला कापाट जोटा अछि ग्रामश्री मेला कापाट means Council of Advancement of People's Action and Rural Technology. A large हाँ तापर अछि रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी तापर प्रमोशन ऑफ रूरल बिजनेस हब्स ए भଳି सब बहुत प्रकार सब हमर स्कीम सब अछि ता भीतर हमकु पसिबा पे पड़िबो एवं रूरल एंटरप्रेन्योरशिप ऊपर गुरुत्व देबा पे पड़िबो बाय व्हिच वी कैन क्रिएट ए लार्ज नंबर ऑफ scattered small entrepreneur in rural based we can create rural based industries like small cottage and medium scale industries. So that's all today. I mark a full stop here in my counseling. मु आजि थारु तमरा क्लोज कली जहा पढेबा कथा काउंसलिंग करबा कथा सब कंप्लीट कली अभिमनु तणो आसंता काली थारु डॉक्टर दामोदर साहू will take your counseling part. अभिमनु आज्ञा सर Okay, sir. प्रतिमा मलिक चर्चिता Yes, Hello. sir. Thank you so much, sir. wishing you all the best for your success of your life. थैंक यू Arpita सर थैंक यू Arpita Das Babita Mahanto Yes, sir. Mamata Hembram hello Niranjana Sahu hello हाँ हाँ सर सर हाँ थैंक यू सर Sagarika Pani Sonali Ponda Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. thank you from my side also that you cordially attend your counseling and regularly you attend your counseling at assigned time at the recommended time particular recommended time all you are cordially attend the counseling class regularly. So thank you to all for your success of your life in your journey. थैंक यू सर Thank you, sir. Sir. Thank you, sir. Thank you.